Hello everyone. So today we'll discuss different clustering methods and what is clustering and what are the different methods we'll discuss today. So what do you mean by first cluster? Cluster is a group of objects that belongs to the same class. एक ऐसा cluster जहाँ आपके जो उसके objects उसके present हैं उन सब की एक ही class होनी चाहिए. We can say that similar objects are grouped in one cluster and dissimilar objects are grouped in another cluster. जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ आपके क्लास के, अगर मुझे क्लास में आपके यहाँ क्लस्टर फॉर्मेशन करना है, सो आई कैन डू द क्लस्टरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ योर अटेंडेंस. कितने बच्चे आपके जिन्होंने अटेंडेंस है उनकी 20% से है बिलो है, कितने बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस 50% से बिलो है, कितने बच्चे जिनकी अटेंडेंस 80% तक है या जिनकी अटेंडेंस 100% है. आई कैन हैव डिफरेंट क्लस्टर फॉर्मेशन ऑन द बिहाफ ऑफ माई एट्रीब्यूट्स. What is clustering? Clustering is the process of making a group of abstract objects into classes of similar objects. Isn't it? Clustering क्या है? It is a method जो क्या करता है, similar objects को एक ही जगह group कर देता है. The picture is representing the clustering method. We are having different cluster 1, cluster 2, cluster 3, and it is representing in terms of a graph two categories, the department and the income. उसके behalf पे कुछ cluster की formation करी गई है. Next, the process of grouping a set of physical or abstract objects into classes of similar objects is called the clustering. Clustering is also called data segmentation in some applications because clustering partitions large data set into groups according to their similarity. यानी कि clustering को हम data segmentation भी कह सकते हैं क्योंकि कई applications में क्या होता है, जो बड़े बड़े data sets हैं उनको हम divide कर सकते हैं on the behalf of the similarity. So clustering can also be used for identification or for the outlier detection. What is outlier? Outlier is basically the noise. नॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम क्लस्टरिंग को यूज कर सकते हैं. So that is an application of a clustering algorithm. It is defining as the picture is representing. It says that there is a person who wants to start a business, um, और ही वांट टू स्टार्ट लॉन्च अ प्रोडक्ट, और वो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है जो ईच एंड एवरी पर्सन शुड परचेज. दैट मीन्स ही वांट द ऑडियंस कि कौन मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेगा. दैट मीन्स ही वांट टू अप्लाई अ मेथड ऑन द डेटा सेट विद द हेल्प ऑफ व्हिच ही कैन आइडेंटिफाई कि मेरे पास ऐसी कौन सी ऑडियंस होंगी, ऐसे कौन से मेरे कस्टमर होंगे जो मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. तो जो डेटा सेट हमारे पास होगा उस डेटा सेट पर हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई सम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम ऑन दैट पार्ट. जब मैंने क्लस्टरिंग एल्गोरिथम उस डेटा के ऊपर अप्लाई करा, on the behalf of that we concluded that these red people will purchase their product. तो उससे क्या हुआ बेटा कि yes, आपके पास आपकी टारगेट ऑडियंस मिल गई and the person get the profit of the business by launching the product and also by selling that product. So that is the explanation of that thing. The data from the customer base is divided into clusters. We can make an informed decision about who we think is best suited for their product. We can identify कि कौन हमारे product को suit करता है. And it is further saying, suppose we are a market manager and we have two new tempting product to sell. We are sure that the product would bring enormous profit as long as it is sold to the right people. So, how we can tell it is best suited for the product for our company, huge customer base? So, with the help of by applying the clustering algorithm, for example, we have sent here as an example in unsupervised learning, and I can apply the clustering algorithms for that part. And on the behalf of the learning observations, we can identify the audience. So some points to remember, it says that a cluster of data objects can be treated as one group. While doing cluster analysis, we first partition the set of data into groups based on data similarity and then assign the labels to the groups. हम बाद में इसमें labeling भी कर सकते हैं. The main advantage of clustering over classification is that it is adaptable to changes and helps single out useful features that distinguish different groups. Now, talking to you regarding the categorization of the clustering methods, basically we are having the five classifications of the clustering. The first one is the partitioning method, second is hierarchical, then density based, then grid based, and then model based. We'll discuss one by one. Talking regarding the partitioning method, it says that it classifies the data into k groups. हम हमारे पास जो data set है उसको मैं k groups में divide करूंगी, which together satisfy the following requirements. The first requirement is each group must contain at least one object. आपके हर cluster में at least एक object तो होना चाहिए, तभी तो वो क्लस्टर बनेगा. ब्लैंक होगा, खाली क्लस्टर होगा तो वो क्लस्टर तो कहलाएगा ही नहीं. तो एटलीस्ट देयर शुड बी अ वन ऑब्जेक्ट. एंड सेकंड पॉइंट, इट सेज दैट ईच ऑब्जेक्ट मस्ट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ग्रुप. आपके एक ग्रुप को तो बिलोंग होना ही चाहिए, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है आपके डेटा सेट में. यस, इट शुड बी बिलोंग टू एटलीस्ट अ सिंगल क्लस्टर.
It then use an iterative reallocation techniques to attempt to improve the partitioning by moving objects from one group to the another. Then we will follow the process of iterative allocation. That means अगर मुझे पोजीशन चेंज करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसको मैं कैसे करूंगी? आई विल अप्लाई अ मेथड एंड आइटरेटिवली वो रिपीटेटिवली चलता रहेगा जब तक कि उसको प्रॉपर खुद का अपना क्लस्टर मिल नहीं जाता. So, in the general criteria of good partitioning is that objects in the same cluster are close or related to each other, whereas objects of different cluster are far apart, are very different. That means कि आपके similarity कैसे किसके behalf में निकाल सकते हैं? On the behalf of the distance. जो आपके nearby होंगे, जो आपके पास होंगे, close होंगे, वो आपके same cluster में रहेंगे. जो दूर दूर होंगे, वो आपके different clusters में belong करेंगे. Basically, the partitioning method is categorized into two techniques or two methods. We can say first one is the k-means algorithm and second one is the k-metered algorithm. Whereas the k-means algorithm works on the mean value of the object, whereas talking about the k-metered algorithm works on the midword of the objects. That means आपके इस मेथड में हम जो डेटा सेट है उसी में से एक ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, पिक करेंगे और उसी ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर ही उसको मिडवाइड मान लेंगे और उसी ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर ही हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और फर्दर आइटरेटिवली इस प्रोसेस को हम अगेन एंड अगेन रिपीटेटिवली चलाते रहेंगे जब तक कि हमें अचीव नहीं हो जाता रिजल्ट. Moving further, the second method, that is the hierarchical method. Talking regarding hierarchical method creates a hierarchical decomposition of the given set of the data objects. दैट मीन्स आपको पता है हायरार्किकल फॉर्म यानी कि एक हायरार्की की फॉर्म में हम काम करते हैं. जैसे अगर मैं बात करती हूँ, वी आर हैविंग अ स्टेट, देन वी आर हैविंग द सिटी, देन वी आर हैविंग द कैटेगराइजेशन फर्दर. moving on, for example, I'm in Delhi. From Delhi I'm residing in Janakpuri, and from Janakpuri I'm living in B block, and from the B block I am in whichever block I am. But basically, we can categorize, do the categorization. We can do the hierarchy of my data set. So hierarchical clustering methods works by the grouping data objects into a tree of clusters. That means it can form a different trees of the clusters. अगर हम बात करते हैं different type की classification की, it is agglomerative and divisive hierarchical clustering, Cure and the chameleon. Third is the density-based method, talking regarding that thing. To discover clusters with arbitrary shapes, density-based method clustering have been developed. जो आपके different different shapes से हम काम कर सकते हैं और density based से हम काम कर सकते हैं. These typically regard clusters as dense regions of objects in the data space that are separated by a regions of low density. दैट मीन्स आपके डेंस रीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे डेटा स्पेस पे वो काम करता है और आपके वो लो डेंसिटी स्पेस से वो उसको डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है. दैट मीन्स लो डेंसिटी जगह कौन सी होगी? जो आपकी नॉइज है, जहाँ आपकी डेंसिटी कम है, जहाँ आपका डेटा डेंस कम है, दैट इज योर नॉइज. और जहाँ ज्यादा होगा, दैट मीन्स इट इज अ स्पेस वेयर डेटा इज मोर अवेलेबल. So basically two techniques is been used in density based method. The first one is DB scan and the second one is optics. DB scan grows cluster according to the density based connectivity analysis. यानी कि जो डेंसिटी के बिहाफ पर आपका हम काम करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन द डीबी स्कैन. टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या करते हैं? टू प्रोड्यूस अ क्लस्टर ऑर्डरिंग ऑब्टेन फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ पैरामीटर सेटिंग्स. ऑप्टिक्स इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द डीबी स्कैन. वो क्या करता है? जो हम आपके क्लस्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं उसकी एक ऑर्डरिंग फॉर्म कर देते हैं और ऑर्डरिंग के बिहाफ पर ही हम पैरामीटर्स को हम सेट करते हैं. Moving further, the grid-based method. What is grid-based method? It is the clustering approach uses a multi-resolution grid data structure. ग्रिड की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपने देखा हो, ग्रिड्स बेसिकली जो आपके ग्राफ में होते हैं, ग्राफ में जो आपके बॉक्सेस होते हैं, स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस, दैट आर बेसिकली द ग्रिड्स. अगर आपने कभी ग्राफ प्लॉट करे हो ऑन पेपर, अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया हो तो ग्राफ में आपके छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं ना बेटा, दैट आर द ग्रिड बेस्ड, दैट आर बेसिकली द ग्रिड्स. तो वो नहीं ग्रिड्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं. इट क्वांटाइजेस द ऑब्जेक्ट स्पेस इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स अ ग्रिड स्ट्रक्चर. जो मेरा ऑब्जेक्ट का स्पेस है उसको मैं एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स में उसको रखूंगी. दैट मीन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रिड्स, जिस ग्रिड्स में आपका डेटा प्रेजेंट है उसी पे मैं काम करूंगी, on which all of the operations for clustering are performed. The main advantage of this approach is its fast processing time, which is typically independent of the number of data objects, yet dependent on only the number of cells in each dimension in the quantized space, isn't it? So moving further, it says that some typical example of the grid-based approach include the first one is the sting approach. ये sting approach आपकी काम करती है, which explore statistical information stored in the grid scale. यानी कि जो आपकी statistical information है, that means the attribute name, the attribute values, the mean, the median, the mode, उन सब डिटेल्स पे हम काम करते हैं. जो उनकी ग्रिड्स में जो डेटा आपको प्रेजेंट है उस पे हम काम करेंगे. Wave cluster, which clusters objects using a wavelet transformation method. There is a method which is called the wavelet transformation. वो आपका यूज करता है वेव क्लस्टर में. एंड देयर इज वन मोर मेथड दैट इज द क्लिक मेथड,
which represents a grid and density based approach for clustering in high dimensional data space. मैं अगर बात करती हूँ मुझे मल्टीपल टाइम्स ऑफ n डायमेंशनल डेटा स्पेस में मुझे काम करना है, at that time I can apply the click method. Moving further, the last one is the model-based clustering. In model-based clustering approach, the data are viewed as coming from a mixture of probability distribution, each of which represent a different cluster. यानी कि हर आपका जो cluster है वो एक अलग-अलग तरीके से represent करेगा. And yes, उसके अंदर आपका mixture होगा. Mixture of what? Mixture of regular probability distribution data. We'll apply some PDF operations, and on the behalf of that PDF applying, we can have different clusters, and different clusters will having the different properties. It is assumed that the data are generated by mixture of probability distribution in which each component represents a different cluster. हर component आपको एक cluster की तरह behave करेगा. अगर मैं इनमें techniques की बात करती हूँ, the first technique is expectation maximization algorithm. The second one is the conceptual clustering, and the third one is the neural network approach. Thank you so much to all of you.